Hi guys, welcome to EPC Academy. Today's next question of time and distance. Question number 16. A man completes a journey in 10 hours. He travels first half the journey at the speed of this and the second of the journey at the speed of this. Find the total journey in kilometer. You know that the distance is fixed, but the first distance, half distance is covered by this and the second is covered. You know total distance if we want to find total distance equals to you right here r. If we find the average speed equals to total distance upon total time. Okay. So if we need to find the total distance, then what we will do? Total distance equals to average speed multiplied with total time. So total time is this, but average speed is not given here. First we find average speed. How we can find average speed? Distance is fixed. First half is this, the second half is this. Simple. We have to use the average speed formula to AB by A plus B. Okay. Otherwise, you can go through total distance upon total time. Okay. Total distance you don't know, but you know here half distance. You can write there half, and divide by total time. Then after you will get. Otherwise, a simpler formula S2 S1 S2 upon S1 plus S2. After that we have find here average speed. This average speed you multiply it by you will get your total distance. The total distance 224. Simple. Okay. I hope you understand this question very well. Question 17. The ratio between the speed of the two trains is this. If the second train runs in a kilometer in 4 hours, then find the speed of the first train. Okay. Speed. So here you find the speed of the second train. Second train runs in a kilometer in 4 hours. In 1 hour, how much it can run? 100 kilometer. Okay. It means its speed is 100 kilometer per hour. If it travels in 8 speed, it means 8 multiply 8 equals to 100. 8 equals to 100. 8 you multiply by which number? 12.5. So similarly, 7 you multiply by 12.5. Mass का 84 it means 87.5 kilometer per hour. Okay, in this way you have to find the speed. Okay, otherwise you can understand that what is the theory is written. Okay, but I have explained you what you need to do. Simple, just 8 equals to this. It means 1 unit equals to 100 upon 8 and multiply by 7 you will get your required answer. Otherwise that I have told you to understand that. Now next, a man tour travels first in this kilometer in this speed and the second next 160 kilometer at this speed. Okay. Find the average speed of the first 320 kilometer of the tour. Because speed don't have fixed, sorry, distance don't have fixed. Simple way. 2s1 s2 upon s1 plus s2 formula use करेंगे और simple speed average speed ठीक है. Next. A car traveling with 5 by 7 of actual speed. Actual speed we don't know. First we say suppose actual speed 7, then now the travel speed is 5. This in this hour and this find the actual speed of the car. Here is the time is given in different unit. First you convert in the same unit. So this you divide by 60, this you divide by 360 and add that values. Then we will get the hours. Then we will get hours. This is your hours. Okay. But now see what we need to find actual speed. Here actual speed what is the given 5 is to 7, but the distance is constant and the time what is? You just do the reciprocal of the time. Means time ratio 7 is to 5. Time ratio 7 is to 5. Okay. Otherwise you can use here d equals to s into t. Okay. So d how much? 42. If he travels by 5 by 7 speed, we write in 5 by 7 into s. S means initial speed, actual speed. Okay, actual speed it's 5 by 7. Now multiply time. After that simplification, we will get this. So
This is your required answer. Next, in covering a distance 30 km, Amar takes 2 hours more than Samir. If Amar doubles his speed, then he would take 1 hour less than Samir. Okay. Find the speed of the oven. तो 30 किलोमीटर स्पीड उसने जो कवर की है, मान लिया हमने एस ए मतलब हवा की स्पीड, ठीक है। तो उसने पहले स्पीड जो एस ए की स्पीड से तो उसे 2 घंटे ज़्यादा लगे, इस बार उसे 2 घंटे क्या हुआ, 1 घंटा कम लगा समय से। इसका मतलब उसका टाइम डिफरेंस कितना है, 3। तो स्पीड डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 30/एस ए और स्पीड यहाँ कितने के लिए डबल, तो 30/2 एस ए। देखो यहाँ 2 आगे, इसका ये वाली स्पीड कम है, तो बिगर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड इक्वल्स टू 3. Why 3? Total time, how much difference? This is 2 and this is 1. It is negative, so 2 minus 1. 2 minus minus 1 means 3. Okay, now you simplify this equation. After that, you will get 5 km per hour. So this is a good question. You have to understand this. Now next question. Robert is traveling on his cycle and calculated to reach a point A at 2 p.m. If he travels 10 km per hour and will reach there 12 noon. If he travel 15 km per hour, at what speed must travel to reach A at 1 p.m.? Now, first speed what is 10, the second speed what is here 15. So d upon 10 minus d upon 15 equals to how much? 2 hours. Okay. Will reach there 12 noon. अगर वो 10 की स्पीड से चलता है, ठीक है, 2 और 15 की स्पीड से चलता है, तो उससे कितना 12। इसका लेकिन दोनों टाइम डिफरेंस में कितना डिफरेंस आएगा, 2। डिस्टेंस हमने मान लिया d. Now simplify, you will get d equals to how much, 60 km. At what speed must he travel to reach at 1 p.m. अब 1 p.m. बस पहुंचेंगे, इसका टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट स्टार्टेड 6 आवर बिफोर 2 p.m. इसका मतलब उसने 8 p.m. तक अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। अब वो चाहता है कि 1 p.m. में पहुंचे, तो 1 p.m. में पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, 8 से 1 तक 5 आवर्स लगेंगे। ये जो 5 आवर्स है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इसका मतलब उसे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, if it takes 8 hours for 600 kilometer journey, if 120 kilometer is done by the train and the rest by the car, it takes 20 minutes more. If 200 kilometer is done by the train and the rest by the car, find the ratio of the speed of the train to that of the car. 120 स्पीड को उसने ट्रेन की स्पीड से कवर किया, तो बची हुई जितनी हो जाएगी उसको कार की स्पीड से ट्रेवल करना, ठीक है। इससे टाइम कितना लगेगा, 8 आवर्स, ठीक है। इट टेक्स 20 मिनट मोर, और उसे 20 मिनट मोर लगेंगे
8 घंटे से ज़्यादा, कितना 20 या 60, 1/3 मतलब 8 होल 1/3 टाइम लगेगा नेक्स्ट ड्यूरेशन। तो ये 8 होल 1/3 ठीक मीन्स 1/24 ठीक। और अब कितना 200 ट्रेन और बाकी कार्स ठीक है। इधर इक्वेशन वाली इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें एस टी और एस कार दोनों का रेशियो मिल जाएगा कितना हो जाएगा 3:4 ठीक। Next, a man covered a certain distance at the some speed had he moved 3 kilometers faster and he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometers per hour slower, he would have taken 40 minutes more. Find the distance. Okay, see. Distance suppose d upon s and the next faster s plus 3. How much difference is 40 minutes. You divide it, then form here one equation. Similarly, next equation you form here, and then after you divide, after dividing, you solve these equations. You will get s equal to here 12. If s is 12, then you put here, then you will get d distance. Next, two stations A and B are 110 km apart on a straight line. One train starts from A at 7 a.m. and travels towards B 20 km. Another train starts from B 8 a.m. and travel towards A at a speed of this. At what time they will meet? यहाँ टाइम 8 है, यहाँ 7 है। पहले हम दोनों टाइम को सेम करेंगे। दोनों टाइम को जब सेम करेंगे, पहले हम दोनों ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 110। इसकी स्पीड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर चुकी होगी। अगर हम इसे 8 तक लाएंगे तो ये 1 घंटे ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो 1 घंटे जो टाइम होगा उसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है 20। इसका मतलब जो बची डिस्टेंस होगी कितनी होगी 90। जो 90 डिस्टेंस है उस 90 को कौन कवर कर लेंगे, ये दोनों ट्रेनें इस 90 की डिस्टेंस में कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, तो 90 की डिस्टेंस में इन दोनों की स्पीड अब ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 20 + 25 कितना आ जाएगा 45। 45 से जैसे 90 को डिवाइड करने में कितना आ जाएगा मिल जाएगा 2। इसका मतलब दोनों कितने बजे 8 + 2 10 बजे मिलेंगे। देखिए जो कैसे सोल्यूशन दिया है 7 a.m. से 8 a.m. तक मिलना है। ठीक है, और सेम ये वही प्रोसीजर। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, very good question this. Now two trains, one of from the Howrah to Patna and the other from Patna to Howrah, start simultaneously. After they meet, the train reach their destination after 9 hours and 16 hours respectively. After they meet मतलब जब वो मिले, इसके बाद एक इधर से इधर पहुंची। ठीक, मिलने के बाद मतलब जो इधर से इधर आ रही थी उसके बाद वो यहाँ पहुंची तो टाइम लगा तो 9 आवर्स और 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली लगा। ठीक, हावड़ा पटना उधर 9 आवर्स लगे और इधर पर पहुंचने में कितने 16 आवर्स लगे। ठीक, अब देखो अगर हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, मतलब इधर वाली ट्रेन से इधर का स्पीड का रेशियो का फाइंड करना है। तो देखो S1/S2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये ट्रिक से लर्न कर लो। ठीक है, और स्क्वायर रूट ये ट्रिक जब भी लगाएंगे जब एक ट्रेन इधर से इधर क्रॉस कर रही है और इधर से इधर क्रॉस कर रही है। क्रॉस करने के बाद का टाइम मतलब इधर से यहाँ तक का टाइम और क्रॉस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये दिए तब ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक, तो S1/S2 इक्वल टू लगाएंगे स्क्वायर रूट T2/T1। ठीक है, जैसे ये लगाएं T2/T1 और T2 की वैल्यू कितनी 16, इसकी वैल्यू कितनी 9, तो आ जाएगा रेशियो 4:9। नेक्स्ट, train A covers this kilometer in 16 hours.
The speed of the train B is a 3/5 that of the train A. Okay. What distance will the C cover in 9 hours if the speed of the train C is two-thirds of the train B? Okay. एस ए और एस बी, पहला एस ए फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकाल दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आ गई 155 किलोमीटर। अब एस ए और एस बी का रेशियो देखते हैं कितना है, 3/5। 3/5 मतलब फर्स्ट ट्रेन अगर हम 5 मान लो, सेकेंड ट्रेन की कितनी हो जाएगी 3। तो ये एस ए और एस बी का रेशियो देखते हैं। उसके बाद बोला गया कि ट्रेन जो सी है कवर इन 9 आवर्स इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी इज टू-थर्ड ऑफ द ट्रेन बी। तो ट्रेन बी की स्पीड क्या है, ये टू-थर्ड, इसका मतलब ये नेक्स्ट ट्रेन सी की स्पीड होगी 2 हो जाएगी, 5:3:2। ठीक है, इसका टू-थर्ड निकालो तो 3 से 3 कैंसिल 2, इसका मतलब एस ए एस बी एस सी, here is mistake, listen एस ए एस बी एस सी, ओके यहाँ पे एस सी है। दिस इज एस ए एस बी एस सी, 5:3:2। ओके, अब क्या बोला गया, ट्रेन सी कवर कितने कर रही है, 9 आवर्स, और फाइंड करना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन सी कवर्स। ओके, तो टोटल डिस्टेंस 2480, व्हाट डिस्टेंस विल ट्रेन सी कवर इन 9 आवर्स। ओके, तो इसका मतलब पहले हमें ट्रेन सी की क्या बताना चाहिए, स्पीड। ठीक है, देखो एस सी, ट्रेन सी की स्पीड अगर हमें पता करनी है तो एस ए की स्पीड जो है 5 बराबर 10, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 155/5। हमने एस सी फाइंड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 155 गुणा 2 कितना है, चेक करते हैं 1 मिनट, 155 गुणा 2 डिवाइड बाई 5, यहाँ आ रहा है 62। ठीक है, तो एक मिनट में चेक करना, 2480 डिवाइड बाई 16155। ठीक है, तो यहाँ पे जो 63 है इसके लिए आएगा 62। ठीक है, अब हमें यहाँ फाइंड करना है डी सी, मतलब कि डिस्टेंस। तो एस इंटू टाइम, टाइम कितना देखा ऊपर 9 दे रखा है। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई बाई 9 यू विल गेट योर डिस्टेंस। जैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो 62 इंटू 9 आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीड क्या है 62। ठीक, देखो इसकी कटिंग देख लो, 5 3 से 15, 5 बन गया, तो यहाँ कितना आ रहा है 31 इंटू 2 कितना आएगा 62 आएगा। सिंपल सी बात है, 63 लिखा रखा है राउंड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। बाय।